ओके, हमारा क्वेश्चन है फाइंड पिवट इंडेक्स। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है। जैसे कि हम बताया जा रहा है। लेट्स स्टार्ट। गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स। ठीक है, आपको एक एरे दी गई है। ओके, कैलकुलेट द पिवट इंडेक्स ऑफ दिस एरे। सो जो एरे दी गई होगी उसका हमें पिवट इंडेक्स निकालना है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द पिवट इंडेक्स। लेट्स सी। लेट मी टेक अ पॉइंटर। ओके, okay. The pivot index is the index where sum of all numbers, okay, sum of all numbers strictly to the left of the index, okay, okay, to the is equal to the sum. Uh, uh, यहाँ strictly to the left of the index is equal to the sum of all numbers strictly to the index right. Okay. अभी क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं, मैं इस चीज को समझाता हूँ क्या है। इफ द इंडेक्स इज ऑन लेफ्ट एज ऑफ द रे, ओके, देन लेफ्ट सम इज जीरो। इफ लेफ्ट इंडेक्स इज ऑन लेफ्ट एज ऑफ array, ओके, then sum is zero because there is no elements on the left. This also applies to the right edge of the array. Okay, return the leftmost pivot index. If there is no such index exists, then return one. डिफरेंट उसने चीजें बताई हैं यहाँ पर। पहले हम मेनली क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन का ये फॉलो अप क्वेश्चन है बेसिकली। तो ये मेन हमारा क्वेश्चन है, पहले हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्या है। मुझे क्लियर कर देना चाहिए ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। क्वेश्चन ये है कि हमें पीवट इंडेक्स फाइंड करना है। तो सो लेट्स सपोज वी हैव दिस अरे 8 कॉमा 1 कॉमा 9 कॉमा 7 कॉमा 2। यहाँ पर मैं कोई और एलिमेंट ले लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक्चुअली ओके, यहाँ पर क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आपका इंडेक्स, कोई भी इंडेक्स, इंडेक्स बेसिकली वो 0 1 2 3 4। वो कह रहा है इन इंडेक्सेस में वो इंडेक्स पीवट इंडेक्स होगा जिसमें अगर हम एक रे, मतलब वो जो अगर हम सपोज करें, सपोज करते हैं, वी आर जस्ट सपोजिंग, ओके, वी आर सपोजिंग आवर pivot index is this 2. It means the value of at index 2 is also 2 by conventionally। ठीक है, अब इस इंडेक्स के इस इंडेक्स के इस इंडेक्स के लेफ्ट तरफ और इस इंडेक्स के राइट तरफ जो भी वैल्यूज हैं उन दोनों को, अब लेफ्ट तरफ जितनी वैल्यूज हैं, एक 8 है एक 1 है, इन दोनों का सम क्या है, 9। इसी तरह राइट साइड पे एक ये है एक ये, इन दोनों का सम क्या है, अ, हमारे पास इन दोनों का सम भी 9 है। If both of these sum are equal, then this we can call this is a pivot index. Otherwise, we can call this as pivot index. This is the basically question. We have to find such a pivot index in which left sum of left sum of the यानी जो pivot index के लेफ्ट साइड पे एलिमेंट्स है उनका सम, और जो पिवट इंडेक्स के राइट साइड पे जो सम है, राइट साइड पे एलिमेंट्स का सम इक्वल है, तो देन वी कैन कॉल इट एज पिवट इंडेक्स। ये बात आई होप आपको क्लियर हो गई हो।
हमें एक इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है कि जब हम पिवट इंडेक्स जिसको कंसीडर करें, हम उसको अपने सम में इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे कि हमने 8+1 9 कहा, 7+2 9 कहा, हमने इस 2 को इंक्लूड नहीं किया। दिस इज नॉट इंक्लूसिव। ओके, so this index we will return, basically value we will not return, we will return index. Let's suppose we have here 7, suppose, just a supposing. So it means 8 plus 7 is 15. So 15 is not equals to 9. So in this case, if we don't find any pivot index in whole array, then we just return -1. If we did not found any of the pivot index, we have just supposed for the sake of understanding this is a pivot index, but pivot index may be 7, maybe this 2, maybe this 7, maybe this 8. Pivot index can be any in your array, but we have just understood by the example to understand the what pivot index is. So let's understand some follow-up questions. uh, if there is an example for this case, if there is an index on left edge of the array, then left sum is 0 because there are no elements on to the left. Okay, so इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा केस आता है कि जिसमें सबसे पहला एलिमेंट ही पिवट इंडेक्स है, कैसे पता चलेगा कि पहला एलिमेंट पिवट इंडेक्स है? अगर ऐसा ऐसा आप कह रहे हो कि ये पहला एलिमेंट पिवट इंडेक्स है, तो हम अपना लेफ्ट जो है उसको अज्यूम करेंगे, लेफ्ट सम जो है उसको अज्यूम करेंगे 0, और राइट सम देखें आप 0 आ रहा, यानी कि अगर 2 को हम कंसीडर करते हैं पिवट इंडेक्स, उस केस में हम लेफ्ट सम को 0 कह सकते हैं। ये क्वेश्चन में बताया हुआ है यहाँ पर, इफ इंडेक्स ऑन द लेफ्ट एज ऑफ एरे, अगर आपका इंडेक्स पिवट इंडेक्स आपके लेफ्ट एज ऑफ एरे यानी कि स्टार्टिंग इंडेक्स आ रहा है, जो कि यहाँ पर आ भी रहा है 2, तो उस केस में हम लेफ्ट सम 0 ले सकते हैं। ठीक है, और सिमिलर अप्लाई फॉर कह रहा है कि आप क्यों ऐसा क्यों 0 ले, क्योंकि वहां पर कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जिसका हम लेफ्ट से इंडेक्स कैलकुलेट करें। सो ये किस्म का, अगर हम देखें ना, क्लू भी है हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सो रिटर्न द लेफ्ट मोस्ट पिवट इंडेक्स, ये यहाँ बता रहा है कि अगर आपके बहुत सारे पिवट इंडेक्स है, एक पिवट इंडेक्स ये सपोज करें एक ये 7 है, एक ये 5 है, तो हमने लेफ्ट मोस्ट यानी कि जो 7 रिटर्न कराएंगे, हम 5 को नहीं रिटर्न कराएंगे। देन अगर कोई भी इंडेक्स नहीं पूरी रे में एग्जिस्ट करता, देन वी विल रिटर्न -1। आई होप you have got understand the question. Let's try to understand how we can solve this problem. uh, see, we अगर हम देखें थोड़ा सा, तो हमें क्या चाहिए? हमें एक लेफ्ट सम चाहिए होगा, जो कि लेफ्ट सम, और हमें एक राइट सम चाहिए होगा, और हमें एक पिवट इंडेक्स चाहिए होगा जो कि हमारा एलिमेंट। अच्छा, यहाँ मैं पिवट इंडेक्स नहीं कंसीडर कर रहा, मैं पिवट इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो कंसीडर कर रहा हूँ। सो बेसिकली पिवट इंडेक्स यहाँ कंसीडर कर लें आप, या पिवट एलिमेंट कंसीडर करें, कोई बात नहीं। हमें ये 3 चीज़ें चाहिए फिलहाल। तो हम कैसे करेंगे? हमें एक लेफ्ट सम चाहिए, हमें एक राइट सम चाहिए, और हमें एक पिवट इंडेक्स या पिवट एलिमेंट चाहिए। सो पिवट इंडेक्स तो सम में इंक्लूड नहीं होगा। लेफ्ट सम क्या होगा? इस पिवट इंडेक्स के लेफ्ट वाली वैल्यूज का सम, और राइट सम इस पिवट इंडेक्स के राइट वाली वैल्यूज का सम। सो हम कैसे मतलब लेफ्ट सम राइट सम कैलकुलेट करेंगे? सो हमारे माइंड में जो सोल्यूशन आता है वो ये है कि हम इसको सपोज करने के, ये हमारा पिवट इंडेक्स है। सो अगर हम इसको सपोज करते हैं पिवट इंडेक्स ये हमारा ये है, तो अकॉर्डिंग टू दिस
वी कैन सपोज आवर लेफ्ट सम टू जीरो। सो यही हम करेंगे कि हम इनिशियली सपोज कर लेंगे हमारा लेफ्ट सम जीरो। अगर ये हमारा पिवट इंडेक्स है तो हमें अब राइट इंडेक्स चाहिए। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? यानी कि अगर हम वन को कह रहे हैं हमारा पिवट इंडेक्स है, इससे अगले जितने एलिमेंट्स हैं उनका हमें सम चाहिए। ऐसी है। तो एक तो बात ये हमारे माइंड में आती है कि हम इससे आगे यानी वन से आगे, यहाँ से सेवन से एक लूप चलाएं और राइट सम कैलकुलेट कर लें। ये बात ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन अगर हम अगेन ये पिवट इंडेक्स मैच करते हैं, जीरो नॉट इक्वल टू दिस होल राइट सम, जो कि बेसिकली 7 10 और 16 और 21 एंड 27। सो 27 और 21 अगर हम देखें तो इक्वल तो नहीं आते। सॉरी, 27 एंड 21 नॉट इक्वल। सो अब अगेन हम 7 पे आ जाएंगे। सो 7 को कंसीडर कर लेंगे कि हमारा पिवट इंडेक्स है। ओके, कंसीडर कर लेते हैं, हम 7 को कंसीडर कर लेते हैं। So before leaving one, we will add this one to some left sum so that we can calculate our left sum updated. So we will add this one to left sum. Now left sum हमारा 1 हो जाएगा। So हम 7 पे आ गए। अगेन 7 से आगे यहाँ तक लूप चलाएंगे और राइट सम कैलकुलेट करेंगे। अब राइट सम से -7 कर दें तो हमारे पास जो राइट सम नया कैलकुलेट हो आएगा वो आएगा 20। तो ये एक किस्म की मजीद हम इसमें ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं कि देखें ना, जैसे जैसे हम इसको पिवट कंसीडर करेंगे, अगेन हम यहाँ तक लूप चलाएंगे। हम इसको पिवट कंसीडर करेंगे, हम यहाँ तक लूप चलाएंगे। अगर हम इसको कंसीडर करते हैं, अगेन हम यहाँ तक लूप चलाएंगे। तो अगेन एंड अगेन हम राइट सम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो क्या कोई ऐसा मेथड जिसमें हमें बार बार राइट सम ना कैलकुलेट करना पड़े, हम एक टाइम पे कर लें और हमारा कांस्टेंट टाइम में हमारा जो है वो सम कैलकुलेट हो जाए? तो उसका एक एक छोटा सा फार्मूला, मैथमेटिकल फॉर्मूला, छोटा सा सिंपल सा, जो हम ट्रिक लगाएंगे वो ये है। एवरीथिंग विल बी सिमिलर, जस्ट व्हाट वी विल डू, we will need this right sum somehow. So we will use the formula. We will calculate the total sum. Total. Total will contain our left sum as well. Total will contain our right sum as well. Total will contain our element at pivot index as well. So we are considering here element, not index, element at pivot index. So we have supposed initially this to 0. It means we have this as well. We can calculate as we proceed. We have also supposed this pivot index. We have also, if we have also this total, we can easily calculate this value. So what we will do? We will first calculate the total. Then I will consider the left sum to 0. Just we did here in the example last time. Then we will suppose one by one the pivot index, and by using this formula we can calculate the right sum. Clear है? So let me solve this problem by using this formula. Uh, the ingredients I need is the ingredients we need: left left sum,
write some element at pivot index. Suppose we consider it as nums at p and total. First of all, we will calculate total. Let's suppose we have integer variable total, and we initialize it with 0. We will run a loop from start of the array until the end of array. I को इंक्रीमेंट करेंगे. We can just go total, and in this way we will calculate sum, that is total sum. Let's call this variable as total sum, so that which makes some readable more. So next we will apply formula. Let's initialize other variable as well, so that we can have everything initialized. Initially, I will consider left sum as 0 and right sum to nothing, because I don't know what the right sum will be. Okay, so we have this. Then I will again run a loop and start my loop from start of the index array, and I will run my loop until the end of the array, and then we will calculate the right sum. Initially we have considered the left sum as 0, so we will calculate first of all right sum. So as per formula, so for making much more readability, I will take it as p, so that we can easily understand this is our we are supposing it our as pivot index. So by using this formula, I will calculate the right sum. So that's simple math. Sorry for this. So why we are doing this nums at p? Why we are subtracting nums p? Nums means element at pivot index. Why we are subtracting it? Because we do not want to include into our right sum. Okay. So in this way we will calculate the right sum, then we will compare our left sum to the right sum. If both are equal, then just return the pivot index p. That is p. Okay. We do not need to return the element. We need to return the index. Okay. So if these are not equal, then what to do? Then just move the loop ahead. But before moving loop to the next element, we want to calculate or update our
left sum. So the we will add currently read element into the left sum so that we can have see I will give you how this statement works. Initially we consider this as sum, sorry, pivot index, and left sum is 0. So if compare on comparison to the right sum, this is not pivot index, then we will add this to this. If this is also not, we will add this to this. If this is also not pivot, this we will add this to left sum until we will not got the left sum equals to the uh, right sum. So let's see if it works. One of thing I forgot, if whole loop after whole traversing whole array pivot index, if it will not found, we will not found able to found a pivot index, then we'll just return -1. So that's on it. I hope you got the points. It is working. So that's it. I think it works. So a pretty good solution. Okay. So if you like it, let me know. That's the solution. That's very simple. What if we did not use this, we have not used अगर हम इसको ना यूज करते तो क्या होता कि हमें अगेन एंड अगेन एक लूप एक्स्ट्रा लगानी पड़ती, ये जो कि अगेन एंड अगेन नेस्टेड लूप, यानी इस लूप के अंदर एक वो लूप होती जो कि अगेन एंड अगेन हमारे लिए राइट साइड कैलकुलेट करती, तो इससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफी ज्यादा हो जानी थी. सो दैट इज व्हाई वी हैव यूज्ड दिस ट्रिक. This is very simple. Okay, that's it.